Now, third supplementary, Dr. John Britas. Thank you, sir. Sir, during the Indigo crisis, one aspect was debated and discussed. That was the existence of a airline cartel in this country. Even the Honorable Minister, while replying to a question, he underscored the fact that we need to have more airlines to ensure that there is no cartelization of airlines. Sir, one of the fallout of this cartelization has been... Be specific about your question, please. Sir, I am coming to the point which you are also interested. An airport like Kannur is denied point of call facility essentially because of the insistence of domestic airlines. In the context of the concerns that you have been expressed, will the minister ensure that point of call facility would be extended to Kannur? Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, this point of call issue for Kannur has been raised multiple times by the Honorable Member John Britasji himself. And many a times when Kerala has been discussing civil aviation matters with the ministry, this has been one priority demand from their side. And I would also like to appraise the House that the point of call issue is not related to one state or one airport. There are multiple states asking for point of call. Point of call is an airport being listed as a destination in the bilateral air service agreements which we have individually with different countries. And the point of call, there are three other point of call already there in the Kerala, which is the highest in any state. And now definitely we are actively looking, sir, bilateral air service agreements. Whenever the saturation is achieved, then we definitely talk with the concerned states and we look into the expansion. And this point of call also definitely we'll have a look into. Thank you. Fourth supplementary, Dr. Fausia Khanji. Thank you, sir. Sir, will the minister inform the House how many ordinary passengers, including senior citizens and medical travelers, were stranded due to over 175 cancellations on a single day at Bangalore, Delhi and Hyderabad airports? What compensation was paid to them and under which legal provision? Does the government accept that crew buffers at Indigo stood at 0% in December 2025 and rose to only 3% by February 26, which is well below any safe operational threshold? If the DGCA was monitoring airlines quarterly, how did this dangerous crew shortage go undetected until a full-blown crisis? Honorable Minister. Chairman, sir, regarding the data that was requested, especially in those three airports, that I'll have to collect and give it to the honorable member, sir, because I don't specifically have for those airports and for those classification of passengers that has been requested. But in terms of the compensation that has been paid during that time, the total number of impacted customers were supposed to be 3,64,000. And the total compensation that was distributed to customers which were after validation. There are many more passengers who need to validate according to their travel tickets and all. 43.81 crores has been dispersed already. And also more than that, the ministry was also in continuous engagement with the airlines that the kind of damage or the impact that it has created to the passengers, much more compensation has to be given to the passengers. So gesture of care was also extended where 10,000 rupees of coupons for travel coupons were also being extended. And for this, 163.92 crores has already been distributed to the passengers. And more, if they can validate their time of travel at that specific time, they will also be extended. That is something which the ministry is also continuously following up with. And regarding the incident that has happened, I've also mentioned it in the House before, that the DGCA has been in continuous engagement with the airlines. Whenever there is a new schedule that has been approved, we have multiple sittings with it. And this was a specific instance where there were new FDTL norms that have come into place. And it was the airlines which had to look into its internal operations and say if the FDTL is coming into place, how many more pilots do we need? How do we do the re-rostering of the crew so that the impact is not there on the operations? And we were consulting, we were discussing with them on a
day-to-day kind of basis before the implementation. But even after it is done, we are taking much more care right now so that this kind of situation doesn't repeat itself. And I also have to tell the House that once this incident happened, and then we have gone and looked into the internal operations, we have suggested for more employment of pilots also, and more than 246 pilots have been employed in this 3 months itself by Indigo itself. So this is all an indication, and we have brought down 10% of the operations for Indigo also. So multiple necessary measures have been taken so that this kind of incident doesn't repeat itself. Now, fifth supplementary, Professor Manoj Kumar Jha. Thank you. Make only one supplementary. Yeah. Not in one supplementary, Very 5 supplementaries, specific, please. 30 seconds. Sir, through you, Honorable Chairman, sir, recently we have seen certain accidents. The whole nation was in mourning for very long. That flight from Ahmedabad to London, subsequently Ajit Pawarji's death. There are reports that the Pilot Association wants the entire issue to be investigated under a particular schedule. Because of the mystery surrounding all the cases, including chopper crashes, is the Civil Aviation Ministry planning to have a much more robust system which does not promote opacity? Thank you so much, sir. Honorable Minister. Sir, Honorable Member has placed a very important question, and which has been thoroughly, widely discussed by the public in general also over the last 1 year. I have to place the record on the table of the House that all the investigations happen through Aircraft Accident Investigation Bureau, which has all the resources to do proper investigation in a thorough, transparent and fair manner. And all the investigations are done through international civil aviation organization standards and protocols that it sets up. It is not India just deciding how I will do the investigation. These are international civil aviation standards where we are all part of those treaties and we all follow those international guidelines and standards. Where the accident happens anywhere in the world, they all have to follow certain standards and procedures. That is the first thing. And the second thing, the AIB, and from the government, we have been continuously trying to strengthen the organization so that most of the times what happens in part of the investigation, many of the investigated things, just for example, if I take the black box, all these were supposed to be sent to the OEM himself. Wherever the part was getting manufactured, to decode it, all these products were sent outside. But for the first time, we have had the decoding labs set up in AIB itself. This was 2 years ago. Now all the major data decoding from the FDRs and all are happening in the country itself. That is another thing, that we have the full authority on the data that is there. And the third thing that I would also like to mention, on top of AIB and the accidents that are happening, all the resources that are required, we are slowly improving so that there is no dependency on any other organizations. All the investigation is thoroughly done by the AIB itself. And in future also, we are trying to give more strength to the organization, that whenever these kind of incidents happen, all the investigation happens in the country itself. Thank you, sir. Now, question number 242, Shriman Pramod Tiwari ji. Question number 242. Honorable Minister. जवाब पटल पर रख दिया गया है. First supplementary, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रीमान, पहले तो एक करेक्शन कर लें, ये जल जीवन मिशन है, जल शक्ति मिशन है. आपने जेएमएम कह दिया. जेएमएम तो एक पार्टी का नाम है, तो मैं कुछ करप्शन के बारे में नहीं बोल पा रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, और अगर आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा. आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या कदम उठाने जा रहे हैं. ये जो जल जीवन मिशन है पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. पानी तो पहुंची नहीं आखिरी छोर तक, घर तक पानी तो पहुंचा नहीं घर के आखिरी छोर तक, लेकिन जो सड़कें प्रधानमंत्री योजना, जो हमारी अन्य योजनाओं में गांव की सड़कें बनी थी, वो सड़कें टूट के पूरी तरह नष्ट हो गई हैं. यही नहीं, Please come to your question. I'm coming to that.
If you are giving a lecture, then minister will give another lecture. Then we will not have the time. Please be specific Sir, about your question. with due respect, I'm just stating the fact. Fact is this कि आज ये मिशन पूरी तरह फेल हो गया है जो शुरू हुआ था मार्क 2 से राजीव गांधी हैंडपंप से। तो मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक कमेटी माननीय सदस्यों की बना देंगे जो मौके पे चला जाए, देख ले कि पानी तो नहीं आया पर जो सड़कें बनी हुई थी, चाहे जिस योजना में बनी हो, वो सड़क खराब हो गई, उसका मुख्य कारण है। मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या कमेटी बना देंगे जो जांच कर ले? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत डिटेल में उन्होंने प्रश्न पूछा। पहले तो उन्होंने कहा कि जेएमएम के बारे में कहा। हमारे जल जीवन मिशन वो जेजेएम है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा जो है कि पहले से ही जो सभी स्टेट की जवाबदारी होती है कि उनको पानी देना स्टेट की जवाबदारी होती है, और इतने सालों तक आपकी सरकार थी, कोई जगह पर पानी नहीं पहुंचा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 70 साल के बाद ये जल जीवन मिशन की योजना बनाई। जब उन्होंने शुरू किया था 2019 में, तब करीब 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन थे। उसमें से कई लोगों ने तो अपनी व्यवस्था खुद की थी, और आज करीब 15.83 लाख करोड़ कनेक्शन हुए हैं। 15.83 करोड़ कनेक्शन घर में लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में और करीब 3 करोड़ कनेक्शन देने वाले। आपकी बात सही है, कई जगह पर पानी नहीं पहुंचा। बहुत से कारण है। स्टेट के अंदर स्टेट इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट ही डीपीआर बनाता है, स्टेट ही टेंडरिंग करता है, स्टेट ही अपना काम भी करवाता है। तो जहां भी जो गलतियां हुई थी, करीब हमारे पास 18,000 जो कंप्लेन आई थी, उसके अंदर हमने करीब 1,000 से ज़्यादा अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिए गए हैं। एक राजस्थान के मंत्री तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 महीने पहले ही बेल पे उनको मुक्त किया हुआ है। कई टेंडर रहे, उनको सबको ब्लैकलिस्ट भी किया गया, और उनके ऊपर एक्शन भी ली गई है। उनकी जो डिपॉजिट होती है वो भी जब्त कर दी है। हमारा टारगेट है, इसीलिए अभी लास्ट वीक में ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कैबिनेट में 1.51 लाख करोड़ रुपया जो बाकी काम है उसको पूरा करने के लिए सैंक्शन कैबिनेट ने दिया है, और उसके जरिए वो काम करने वाले हैं। मगर उसके पहले ये जो भी गलतियां किसी की भी हो, किसी ने गड़बड़ी की हो, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। ये क्लियर जो निर्देश हमें प्रधानमंत्री जी की ओर से मिला हुआ है, और उसके ऊपर हम पहले स्टेट के साथ एमओयू करने वाले हैं। एमओयू के बाद ही जो ग्राम वाइज हर गांव का एक आईडी बनाया हुआ है, गांव का कनेक्शन वहां पानी जाएगा जब भी उसको पैसा देंगे। इस तरह का पूरा यहाँ व्यवस्था अभी जो की गई है, उसके कारण जो पूर्व में भी जो भी गलतियां या गड़बड़ी है उसको भी ठीक करते हुए आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन में सबको पानी मिलेगा। और सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी भी मिलेगा। जो आज तक पानी का प्रॉब्लम था, करीब 9 करोड़ बहनें पानी के लिए रोज दूर तक जाती थी, उनके 5.5 करोड़ घंटे इसके अंदर बिगड़ते थे। आज उनको उसमें से मुक्ति मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो एसबीआई का भी रिपोर्ट कहता है कि इस योजना के कारण करीब हर साल जो 60,000 बच्चे डायरिया होने के कारण उनकी मृत्यु होती थी, तो वो भी पहले ही 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चों की जान भी बचाई गई है। जो पानी भी मिला है उसके अंदर कोई सरकार ने आज तक कभी दावा नहीं किया। ये पहली योजना है कि जिसके अंदर दावा किया गया है कि आपके घर में आने वाला पानी शुद्ध है, और वो चेक करने के लिए 24,80,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, और उनको किट भी दी गई है। और इसमें से 8 लाख महिलाओं ने पानी चेक करके वो पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी डाला हुआ है। ये पहली योजना है कि महिलाओं को इसके अंदर साथ में जोड़ा गया है। तो गलतियां है। हमने सभी कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी सांसदों को दिशा मीटिंग में उनको इसके साथ चर्चा करें, उनको बुलाए। जब जल के लिए भी जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी उन्हें इन्वाइट करें, और दिशा के मीटिंग में डिटेल में उनको बताएं। और मैंने आगे लोकसभा में भी और यहाँ भी बताया हुआ है कि आपके कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में अगर कुछ भी गड़बड़ी उनके ध्यान में आती है वो जरूर बताएं। हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर करके पानी मिलता रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी, प्लीज बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। वेरी ब्रीफ सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि मेरा जो सवाल था उसका जवाब तो आया नहीं।
कमेटी वाला जो मेंबर पार्लियामेंट से बनाने के लिए कही थी, आप संरक्षण दें इस पे, क्या बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दूसरा, सारा करप्शन का जड़ एक राज्य के ठेकेदारों के हाथों में पूरी मिशन सौंप दिया गया है। और दूसरा इसमें यह हो रहा है कि वो तो कम नहीं कर पा रहे हैं और इतना शानदार काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पानी की टंकी बनी, उद्घाटन हुआ और दूसरे दिन टूट गई। उद्घाटन से पहले भी टूट गई। उद्घाटन के पहले, अरे ये बहुत, मैं भावनाओं के साथ कहना चाहता हूं, कोई लंबा भाषण नहीं, कि सच्चाई है कि इनकी सीधी जिम्मेदारी नहीं। अगर नहीं तो इनके विधायक लोग मंत्रियों का घेराव उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं? सही बात, सबकी जानकारी में है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा सहयोग देते हुए, पूरा इस योजना की सफलता की कामना करते हुए, क्या आप मेहरबानी करके कुछ अपना भ्रष्टाचार इसमें कम कर सकते हैं? अगर कम कर सकते हैं तो एक राज्य के ठेकेदारों को आप देते हैं, फिर वो पेटी ठेकेदारों को देते हैं। वो दिस इज ब्रीफ सर, अब तो बिल्कुल ही ब्रीफ हो गया। मैंने सिर्फ ये पूछा क्या कुछ भ्रष्टाचार कम करेंगे। स्पेसिफिक अबाउट योर क्वेश्चन प्लीज। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछे खत्म कर दूंगा। आपने बजट घटा दिया है, ये तो मानते हैं आप, रिकॉर्ड्स पे। तो क्या जो बजट घटाया है उस बजट को पुनः आवश्यकता के अनुसार बढ़ाएंगे? मेरा सीधा सा इतना छोटा सवाल। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, मुझे जो मेंबर ने प्रश्न पूछा है उसके सामने ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि अपना भ्रष्टाचार कम करेंगे, ये शब्द के सामने मुझे ऐतराज है। हमने आपको पहले भी बताया सर, आपके माध्यम से मैं उनको वापस बताना चाहूँगा कि जो स्टेट का काम होता है वही डीपीआर बना के हमारे पास डिमांड करता है, उसके बाद वो टेंडर करता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करता है और हम उसको 50% आर्थिक सहाय करते हैं, टेक्निकल सहाय करते हैं। और मैंने जो कहा कि एक मंत्री जो जेल में गए, अभी उनको जो बेल मिला वो राजस्थान के थे और उस समय के थे। अभी मैं उसको डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, मगर जिस तरह से काम हुआ जी, जब उनकी सरकार थी तभी तो। हाँ, उनकी सरकार थी, उसी मैंने कहा कि मुझे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था। और उनकी सरकार थी, उनके ही पार्टी के जो मंत्री थे उनको अभी अभी बेल हुई है। तो ये जो भ्रष्टाचार किसी ने भी किया, मैंने आगे भी कहा था कि हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी पार्टी की सरकार होगी, अगर कोई भी गलती हुईगी हम उसको चलाएंगे नहीं, हम एक्शन भी लेंगे और पूरी तरह से ये योजना को सफल बनाने के लिए, क्योंकि अब महिलाओं की योजना है, हर घर जल देने की योजना है, वो पूरी करेंगे। यही मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। सबको इस पे इन्वॉल्व करने के लिए ही दिशा में सभी सांसदों को वहाँ उसके अंदर इसकी चर्चा हो, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको मिले, इसीलिए तो कलेक्टर को सूचना भी दी गई है, जो पहले और नहीं था। तो वो भी काम उसके अंदर किया गया। उनका जो डिमांड था कि कमेटी बनेगी क्या, तो उनको तो पूरा अधिकार उसके अंदर दिया गया है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान अरुण सिंह जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन में काम तो ऐतिहासिक हुआ है, क्रांतिकारी काम हुआ है सर। कुछ राज्यों में अनियमितता जरूर हुई है सर। 2019 से यह शुरू हुआ और 2023 तक कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में थी, सबको मालूम है कि कई फर्जी कंपनियां वहां पे आई जब गहलोत की सरकार थी और बहुत बड़े पैसे की लूट हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की सरकार के समय राजस्थान में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में लूट हुई है, उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं और वह पैसा किस प्रकार से रिकवरी होगी, इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो भी गड़बड़ी हुई राजस्थान की, जो उन्होंने भी बात की है, अभी अभी राजस्थान सरकार ने वहाँ के जो अधिकारी है वो 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे उनको भी वो लुकआउट नोटिस उनको जारी किया गया है। करीब 900 करोड़ का गफला एक ही अधिकारी के समय में ये हुआ है। उसके लिए रिकवरी करने के लिए भी हमने स्टेट के उसको कहा गया है उनको कि ये जो जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है वो भी पॉइंट आउट करके उनको दिया गया है और उसके ऊपर राजस्थान सरकार पूरा काम भी कर रही है। उन्होंने कई लोगों के ऊपर एक्शन भी ले लिया है और आगे भी बढ़ रहे हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान।
मेरा बिल्कुल एक पॉइंटेड क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के संबंध में कि उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने के लिए किन कंपनियों या किन ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, कितने प्रतिशत घरों में पानी पहुंच गया है, कितने प्रतिशत गांव में अभी तक टंकी नहीं बनी। Honorable Minister. उत्तर प्रदेश के बारे में जो उन्होंने कहा है, करीब पूरे देश में करीब 1 करोड़ 1.50 लाख करोड़ की योजना सिर्फ यूपी के लिए बनी है और उसके अंदर बहुत सा काम हुआ है। फिर भी जब अभी आगे भी कहा गया था कि 2-3 जगह पर टंकी गिरी, इतने बड़े प्रदेश में जो 2-3 टंकी गिरी उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई की गई है, उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनके अधिकारी जो जवाबदार है उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। अभी जो टोटल यूपी का कितना फिगर है वो हमारे पास अभी आज उपलब्ध नहीं है, मगर मैंने कहा वैसे कि करीब 15.82 करोड़ घरों में अभी तक कनेक्शन गया है और 3 करोड़ घरों में बाकी है। तो आने वाले दिनों में आज ही हमने उत्तर प्रदेश के मंत्री जी को भी बुलाया है और उनके साथ पूरी बात करके जहाँ जहाँ बाकी है उसको हम आने वाले दिनों में जल्दी से पूरा करना चाहता है। जो पूरे देश के अंदर करीब 67 लाख जो घर है, जो स्कीम है उसके अंदर ये पानी देने का काम चल रहा है, उसके अंदर 87,000 घरों में पानी अभी पहुंचेगा और उसके साथ जहाँ जहाँ अभी पानी पहुंचा नहीं है, जिन्होंने पाइप डाल दिया मगर पानी का सोर्स नहीं था, हम आने वाले दिनों में सबसे पहले ये 2.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका MOU का काम भी शुरू है, शायद आजकल में ही पहला यूपी का एक MOU हो जाएगा ऐसी संभावना है। तो सभी स्टेट के साथ MOU में जो शर्तें डाली हुई है कि जहां पर भी पानी नहीं पहुंचा है तो वहां पानी पहुंचना चाहिए, 15 दिन तक वो पानी वहां पहुंचेगा और सरपंच जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ही हम स्कीम वाइज उनको पैसा देंगे। हम उसको जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उनको डायरेक्ट उनको पेमेंट जो जा रहा था उसको भी स्पर्श के माध्यम से वो पैसा देगा तो गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी जाएगा 15 दिन पानी पहुंचने के बाद जब सरपंच और गांव के लोग उसको जब आइडेंटिफाई करेंगे, एक सर्टिफाइड करेंगे, उसके बाद ही हम उसको पैसा देंगे तो जो बचे गांव हैं वो भी जल्दी से खत्म हो जाएंगे। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय सिंह जी। सर उत्तर प्रदेश में ये मैंने जानना चाहा सब गुजरात के सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है सर कि माननीय मंत्री जी ने ये उत्तर पढ़ा नहीं, अधिकारियों ने इनको गलती से उत्तर दे दिया। माननीय आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, इस उत्तर में लिखा इन्होंने आसाम में 1226 शिकायत आई, कार्रवाई 17 पे हुई, ठेकेदार 3 पे कार्रवाई हुई। बिहार इतना बड़ा प्रदेश, एक भी शिकायत आई ही नहीं, एक भी कार्रवाई हुई ही नहीं, एक भी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात मान्यवर एक शिकायत आई, एक शिकायत पूरे गुजरात में आई और 12 पे कार्रवाई कर दी इन्होंने। एक शिकायत आई और 12 पे कार्रवाई कर दी और 11 ठेकेदार पे कार्रवाई कर दी। फिर हरियाणा में 4 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर में 24 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में 37 शिकायत आई, शिकायत ही 37 आई और कार्रवाई 151 पे कर दी। मान्यवर ये किसने उत्तर बनाया है? उसके बाद महाराष्ट्र में 154 शिकायत आई, एक पे कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में 1000, उत्तर प्रदेश में सर मेरा सवाल अंतिम, उत्तर प्रदेश में 16 खत्म कर रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश में 16,178 शिकायत आई और 196 पे कार्रवाई हुई। मान्यवर शिकायतों के आने और कार्रवाई करने में इतना बड़ा विरोध क्यों है, इतना बड़ा अंतर विरोध क्यों है, या ये आंकड़ा झूठा तैयार किया गया? मान्यवर क्योंकि अगर शिकायत ही एक आई तो 12 पे आपने कहां कार्रवाई कर दी, शिकायत 37 आई तो आपने 151 पे कार्रवाई कैसे कर दी? और बिहार जैसे बड़े राज्य में एक भी शिकायत नहीं। मान्यवर कैसे लोग यकीन करेंगे इस उत्तर पर? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो शिकायतें आती है वो स्टेट के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। अभी तक 18,790 शिकायतें हमारे यहाँ ऑफिशियल दर्ज हुई है और उसके अंदर से 635 विभागीय अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है, 1020 ठेकेदारों के ऊपर और 155 तृतीय पक्ष निरीक्षण करके एजेंसियों के ऊपर
जो एजेंसियां थी उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। पहली बार ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने ठीक से अपना काम नहीं किया, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया, उनके ऊपर एक्शन भी लिया है और उनका रिकवरी का काम भी चालू है। जो आपने बताया कि हम जो एक्शन लेने की बात करते हैं, हमारे पास जो कंप्लेन आती है राज्य के द्वारा आती है और हमारे पास डायरेक्ट भी जो आती है हम स्टेट को भेजते हैं। स्टेट इसके ऊपर मान लो हमारे पास एक कंप्लेन आई होगी, बाकी कंप्लेन स्टेट के पास आई होगी, तो एक के जगह 12 जगह उन्होंने काम उसके ऊपर एक्शन लिया होगा। ये तो अच्छी बात है कि 12 अगर कंप्लेन आती और एक पर एक्शन लेते तो बोल सकते थे कि 11 पर क्यों नहीं लिया। यहाँ तो एक कंप्लेन आई और 12 जो बाकी उनके पास आई होगी स्टेट के पास, तो उनके ऊपर भी एक्शन ली गई। मैं ये बात मानता हूँ कि कई कंप्लेन है, मगर ये कंप्लेन दूर करने के लिए हम बिल्कुल प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो कंप्लेन का लिस्ट वो जो आता है वो स्टेट की ओर से ही आया है, इसके लिए वो यहाँ पर आपको बताया गया। Now question number 243, Srimati Sulada Dev. Question number 243, sir. Honorable Minister. Placed on the table of the House. First supplementary, Srimati Sulada Dev. थैंक यू सो मच चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, ओडिशा एक साइक्लोन प्रोन स्टेट है। ओडिशा में 99 सुपर साइक्लोन से लेके हुडहुड, फाइलिन, तितली, अम्फान, बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स आए हुए हैं जिसमें उड़ीसा का तटीय क्षेत्र और बहुत प्रभावित होता है। जब मेरा ये प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि ये वनरेबिलिटी की देख के कि ये साइक्लोन प्रोन स्टेट है, क्या मंत्री जी जो सुरक्षित उड़ान को सुनिश्चित करने के लिए एडवांस डॉपलर वेदर रडार और रियल टाइम विंडसर डिटेक्शन सिस्टम और मॉडर्न एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करेंगे क्या? उड़ीसा के बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, ये दोनों हमारे बहुत वनरेबल एयरपोर्ट से था। थैंक यू सर। Honorable Minister. Sir, honorable member has asked about the impact of cyclones on civil aviation operations, especially the coastal area. And I truly understand the seriousness with which she has asked the question, because I also come from Srikakulam, which is right adjacent to Odisha and also a coastal area. And the cyclones that have been mentioned, let it be 99 or the Hudud or Failin, all these cyclones, even Srikakulam was affected in a very big way. But when it comes to civil aviation or operations, the weather data or the meteorological data, all this is provided by IMD, which is in a different department. And taking the data that has been provided from them, the aircraft operations are done in a very safe and secure manner. And regarding the infrastructure that has been put in Odisha for getting better weather-related information, integrated aviation weather automatic stations and runway visibility reporting systems, all these have been put at Bhubaneswar Airport, which is the international and the biggest airport in Odisha. And the state has also been equipped with the state-of-the-art Doppler weather radars. In 2 DWRs, the Doppler weather radars have been installed at Paradeep and Gopalpur. These are both coastal locations, and they provide us with the data on how the cyclones are coming. The tracking and monitoring of cyclones happens through these DWRs, and 2 state-of-the-art DWRs have already been mentioned. And a cyclone warning center, CWC, is also functional in IMD Bhubaneswar, which also supports for weather-related data. And all these data is compiled by IMD and provided to the airports and the navigation systems and the aircrafts and the pilots, so that their operations are not hampered by the weather. Thank you, sir. Second supplementary, Srimati Sulada Dev ji. Thank you, Chairman, sir. My second supplementary is whether the government has allocated any specific budget or financial assistance under aviation infrastructure modernization scheme for installing advanced meteorological equipment, satellite-based navigation systems, and upgrade air traffic control technologies at airports located in the coastal and cyclone-prone regions of Odisha. Thank you. Honorable Minister. Sir, the upgradation of air traffic control machines or the systems
the avionics, everything is done on a very regular and periodic manner. And not only it relates to the weather-related or IMD-related systems. Under AI, we have the ATC and navigation systems, and they are placed at each and every ATC tower that is there in our airports. And all of these undergo a regular upgradation process, depending upon the technological advancements that happen in that sector and the world-class standards that we kind of observe. And we want our civil aviation in India also to be of the global standards. So this continuous process is there. Infrastructure development continuously happens. And then the automatic ATM automation system is also integrated with our weather-related systems, and then different levels of ATCOs and the ever-increasing air traffic of Indian FIR. All these things are taken into account when we upgrade our systems, and sufficient infrastructure spending is also done so that all the systems are not outdated and everything is functional and connected. Third supplementary, Dr. Ajit Madhavrao Kopchade ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मोदी सरकार के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूं। विशेष रूप से उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय विमान मंत्रालय के माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार विमान निर्माण इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को विशाल निवेश और विशेषज्ञ का उपयोग करने पर विचार कर रही है क्या? विशेष रूप से यह देखते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल विजन को जो पूरा करता है, और अभी अभी आपने जो जवाब दिया है उसमें एक उप प्रश्न मेरा है कि विमान मंत्रालय सरकार उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और जैसे उसको जुड़ के AI तकनीक का उपयोग करने के लिए कंपनी के साथ काम करने पर हमारी सरकार क्या विचार कर रही है, ताकि हम इन विमान दुर्घटनाओं के रोके हुए कि हमारे जो मूल्यवान मानव जीवन की हानि को हम रोका जा सके। इसका हमें आपके तरफ से क्या हमें योजना कर रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है, इसके ऊपर आपका जवाब चाहिए। Honorable Minister. Sir, regarding the investment in manufacturing, in aviation, we have taken it up very, very seriously, sir. And for the first time, I'm very happy to tell the House also that Embraer, which is a Brazilian aircraft manufacturing company, has come into a joint venture with the Indian manufacturing company, and we are going to very soon start a final assembly line in the country, which is going to improve the manufacturing ecosystem. And this is not a very easy sector to start with, sir. Aircraft manufacturing is very complex, very precise engineering takes place, and countries have had this project of building their own aircraft for many decades, and some have not been successful also. That is why when you look at the international level, only a handful of countries are able to manufacture the aircraft in today's age. But today, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we are going with the attitude that everything is possible in this new India that is going through. So in this setup, sir, we have strongly associated ourselves. We have collaborated with international companies. One I have mentioned, Embraer, and also the Russian Sukhoi people. They have also entered into an MOU with HAL to manufacture their SJ-100 Superjet, which is also a 100-seater and very, very important for our regional connectivity also. And on top of that, our regional transport aircraft program is also being given a lot of strength and boost right now. We have a lot of aircraft component manufacturing that is happening today, sir, because we are being seen as a very trusted and loyal manufacturing partner and a supply chain manager for the whole world itself. So with that status, more and more manufacturing is being set up in the country itself, especially for aviation and aerospace ecosystem. And in the coming days, as we improve the aircraft components and also the final assembly line, we are going to see more investment come in this manufacturing sector also. Fourth supplementary, Shriman Sandosh Kumar PG. Thank you, sir. Sir, as we all know, the international situation is highly complex and tensed. So I would like to know from the minister, through you, sir, how many operations from India and to India are cancelled after the outbreak of this ongoing war on February 28th,
and the Election Commission has announced the schedule of the assembly elections. So will there be any special step to ensure that our Pravasi voters can come and exercise their franchise? Honorable Minister. Regarding the cancellations that have happened because of airspace closure in West Asia, almost till now, sir, in a cumulative, Indian carriers have cancelled up to 4,335 flights, and foreign carriers have cancelled up to 1,187 flights. And the first thing we have to remember during this crisis is that the safety of the operations is the topmost priority. When the airspace itself is closed, there is no reason for us to operate in this area. But with constant communication with the air regulators in those specific countries, we have had 24/7 communication with them, and whenever there was a slot available for us to operate, we have operated, sir, and I can tell you that almost 219,780 people have travelled during this crisis time also, and we have ensured safe operations because our DGCA, our aviation department, everyone is in thorough and collaboration with the authorities there. And right now, there are still some airspace which is still closed, and we are trying to do our best to facilitate for them. But first and foremost, the airspace has to be open. It has to be safe to travel. Only then we can have the regular travel take place. Fifth supplementary, Dr. Anil Sukhdev Rao Bondeji. सभापति महोदय, सर ये प्रश्न और 241, 244 इससे संबंधित मैं पूछ रहा हूँ। सर, माननीय मंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनकी उड़ान योजना में अमरावती के एयरपोर्ट का माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस उनके प्रेजेंस में उद्घाटन किया, और तब से अभी अच्छे रिस्पांस के कारण 5 फ्लाइट मुंबई जा रही है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग शुरू करने की सुविधा उपलब्ध करने की ज़रूरत है, तथा 3000 मीटर का रनवे निर्माण करना भी आवश्यक है, और तथा अमरावती एक डिविजनल सेंटर है, एजुकेशनल हब है, पीएम मित्रा जैसे प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। तो अमरावती से दिल्ली कनेक्टिविटी, अमरावती से पुणे कनेक्टिविटी, पुणे गोवा कनेक्टिविटी, और अमरावती से हैदराबाद तिरुपति, और अमरावती से बेंगलोर कनेक्टिविटी, इसके करने के लिए और मुंबई का फ्लाइट रेगुलर करने के लिए कुछ प्रयास करने की मैं विनती करता हूं। उसके बारे में मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। धन्यवाद। Honorable Minister. Chairman, sir, Amaravati is one of the most aspiring airports in the state of Maharashtra, and we have also put special focus to inaugurate the airport. And also I have to tell that the biggest flying training organization, FTO, is coming up in Amaravati by Air India, which is going to be the biggest in South Asia also. And when it comes to the regular connectivity, sir, we are giving a priority to that airport. We are talking with the airlines. The state government of Maharashtra has also doing their bit to improve the operations there. And the connections that have been mentioned by the honorable member, we will discuss with the airlines, and we will try to see that the connectivity improves from that specific airport. Now, question number 244, Sriman Kiru Mahatoji. So, Honorable Minister. It has been placed on the table of the House. So, third supplementary, Sriman Satnam Singh Sandhu ji. सर, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एविएशन की कैपेसिटी बिल्डिंग में पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ दिया गया है। पंजाब में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए गए हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। सर, हमारी समस्या है कि पंजाब में जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, जो 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, उसमें पॉइंट ऑफ कॉल की सूची ना होने की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वहाँ पे लैंड नहीं करती है। तो मेरा निवेदन है कि अगर चंडीगढ़ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और शुरू की जाएं तो हमारे पंजाबियों को बहुत सुविधा होगी, क्योंकि पंजाब से दिल्ली आने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, और 11-12 घंटे की वेटिंग के बाद
इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ते हैं पंजाबी। तो मेरी मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को पॉइंट ऑफ कॉल की सूची में कब तक शामिल किया जाएगा? Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, sir, another member was also asked about this specific point of call, and I have also said that this point of call issue is not only for one specific airport. There are multiple airports, multiple states have been requesting for point of call for better international connectivity. And if you look at Chandigarh, they have connectivity to Abu Dhabi and Dubai also right now. So point of call is a requirement when foreign carriers have to come to our specific airports. If our domestic airlines, Indian carriers have to travel to anywhere across the world based on the BASA bilateral air service agreement, they can travel from any of the airports. It has to be international, and Chandigarh is an international airport. And regarding the international air connectivity, couple of points so that people understand the whole argument around this air service agreements. One, definitely we want the first advantage to be taken by our Indian carriers, sir. It is our responsibility as a government also to encourage more of our Indian carriers to take our international traffic in their own aircrafts. So for that, we are trying to see how best we can facilitate our Indian carriers. Second, we want our hubs to also grow. We have all these metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Bangalore. But what happens when you give more points of call? The foreign carriers come and all the international passengers are taken to their country. They offer the transit airport, and then from there they are trying to send them to other destinations. Why can't we only do it? Why can't Delhi become an international hub? Why can't Mumbai become an international, Bangalore become an international hub, Hyderabad, Kolkata? So it is with that idea also we want to encourage our Indian carriers to take more and more people. So while keeping this intact, we have given many points of call across the country, and definitely if there is a very specific requirement, like Honorable Member has mentioned about the Chandigarh airport and the traffic that it's generating over there, definitely the government will look into it, sir. Next supplementary, Srimati Mahu Maji ji. सभापति महोदय, झारखंड की औद्योगिक और खनिज क्षमता को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार की लंबे समय से मांग है। झारखंड सरकार ने भी रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास ही 120 एकड़ लैंड में आईटी हब बनाने की घोषणा की है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की और ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने और कार्गो सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करेगी? Honorable Minister. Sir, upgradation of airport is a continuous process and a stepped process. So we start from basic operations and slowly add in more facilities, and ultimately we make it an international airport. And definitely we will look into the stronger operations of Ranchi also. On top of that, sir, parallel taxi track and rapid exit taxiway at Birsa Munda Airport, Ranchi has also has been estimated at 107 crores. And extension of apron and ball has also been done at 25 crores. And reconfiguration of existing terminal building at 12.86 crores has also been taken up. And another 9.1 acre land is also required, sir, for the expansion of runway. This we are in discussion with the state government, as and when the land comes to Airport Authority of India, the expansion of runway will take place. And all other works in the airport like ATC and the exit taxiway, parallel taxiway, everything is being taken up. So the infrastructure at Ranchi Airport is continuously improving. Fifth supplementary, through Dr. M. Thambiduri ji. Thank you very much, Chairman, sir. I thank, on behalf of Tamil Nadu people, to Modi's government for declaring Madurai Airport as international airport. Sir, I want to know, through you, sir, Honorable Minister, what is the status of the Green Airport near Chennai, Parandur? And also, sir, you are coming from Coimbatore. The Coimbatore Airport also has to be expanded. I don't know what is the position of the Coimbatore Airport. And also, that I requested many times to use the private airport to Hosur to utilize for commercial purpose. How you are going to take action? All this is Parandur Airport and Coimbatore Airport with our Honorable Chairman is coming, and also regarding the Hosur Airport, I want to know the status. Honorable Minister. Thank you very much, Chairman, sir. Regarding Tamil Nadu civil aviation operations, I can proudly say that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji,
the expansion that has taken place in the last 12 years has never been observed any time before. Almost 40% traffic has improved in Tamil Nadu, sir. In Chennai itself, Airport Authority of India is taking up a new terminal building which is costing up to 2,500 crores, and we are going to inaugurate it in a few months itself. Salem Airport has been operationalized under RCS Udan scheme, and now good connectivity is being provided there. Tuticorin Airport, which is now renamed as Thoothukudi also, because in Tamil it was written as Thoothukudi, and in English and Hindi it was written as Tuticorin. To decolonize the whole naming this thing and to restore the Tamil pride, we have done Thoothukudi in all the languages, sir, and we have spent 450 crores for that airport to inaugurate a new terminal building. And then Madurai, we have declared it as international airport. And Coimbatore Airport, which is the second largest city in Tamil Nadu, and huge demand for more operations is there. For a long time, there was a handicap there because for extension of runway, we didn't have any land. After multiple deliberations with the state government has handed over 600 acres of land. Now we are going ahead with the plan with a grand terminal building we are going to do over there. And very soon we are going to lay the foundation stone for Coimbatore Airport also. And it's going to be one of the best terminals this country would have ever seen. It is with that concept we are trying to build the Coimbatore Airport, sir. And the second airport that has been mentioned, the Taneja Airport is the private airport in Hosur. Taneja has been doing MRO operations and non-scheduled operations from that airport. We have on multiple occasions requested the private operator to let commercial operations also take place. For some reason, he has not accepted that. I think from more coordination and deliberation from the state government also would help, because a lot of good infrastructure is already there at this Taneja private airfield. And if we can add commercial aviation also there, civil operations also there, for that area it is going to cater as a good additional air connectivity. But from the ministry we'll definitely work on it. And considering the other Parandur Airport, which is the second airport that has been envisioned by the state government, we have given the site clearance. Now, since we have given the site clearance, the next process is to give in principle clearance, but for that the state has to send a proposal. Thank you, Honorable Minister. Now, question number 245, Dr. Kanimali NVN Somu ji. Honorable Minister. Sir, Patel पर रख दिया गया है. Now, third supplementary through P. Wilson ji. Chairman, sir. Sir, Tamil Nadu has been one of the best performing states in the country, providing functional household tap connection to 1.12 crore out of 1.25 crore household, achieving nearly 90%. But sir, only 5,914 crore have been released, leaving 3,112 crores pending. For 2024-2025, 2,434 crores was allotted, but only 732 crores have been released. Sir, because of this, Tamil Nadu government itself has to advance 2,550 crores. Sir, for Okinakkal Combined Water Supply Scheme Phase 3, sir, the project was approved at the cost of 8,428 crores with the union government share of 2,283 crores under the Jal Jeevan Mission framework. But today, sir, the union government says the project stands cancelled and suddenly informs that the assistance cannot be extended. Sir, 10 additional multi-village drinking water schemes worth about 7,590 crore proposed by the Tamil Nadu for full rural coverage is also pending for approval, sir. I need an answer for this. Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, ये जो जल जीवन मिशन की योजना थी वो 2024 मार्च तक थी. सभी राज्यों की ओर से ये काम 2026 के पहले पूरा करना चाहिए था, मगर उन्होंने समय पे काम पूरा नहीं किया और उसके कारण जो पैसा उनको खर्च करना चाहिए था उसका आधा पैसा उन्होंने स्टेट ने अपनी ओर से डालना है और नहीं डाला, उसके लिए वो पैसा उठा नहीं पाए थे. फिर भी अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया है, 2028 तक इस योजना को आगे बढ़ाया है और जो 2024 के पहले जितने डीपीआर सैंक्शन हुए होंगे, टेंडर हुआ होगा और काम चालू हुआ होगा, उसको पूर्ण करने के लिए अभी इसका पैसा दिया जाएगा. मगर
तो पहले उनको काम पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पानी जाएगा, उसके बाद ही उनको पैसा जाएगा। पैसा जरूर जाएगा, मगर 2024 के पहले का जाएगा। अगर डीपीआर में उन्होंने कुछ गांव पहले से नहीं लिए है तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से अपने पैसे से वो गांव के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान रविचंद्र वाडी राजू जी। माननीय मंत्री जी को पूछने का मौका मिला था। सर, वेदर गवर्नमेंट हैज रिव्यूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन तेलंगाना, particularly in tribal and remote areas such as Bhadradri, Kottagudem and Mulgu and Adilabad districts, whether drinking water access remain a challenge, and whether government is considering independent third-party inspections of Jal Jeevan Mission's works in Telangana to ensure that the tap connections provided are delivering regular and safe drinking water supply, sir. Thank you. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा मेंबर को कि पूरे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर केंद्र सरकार की सहायता नहीं ली। उसके अंदर एक बिहार था जिसने अपने पैसे से काम किया, इसके लिए उनकी कंप्लेंट भी नहीं आई थी। और दूसरा है तेलंगाना, उन्होंने भी अपने पैसे से जो काम किया और ये काम के कारण हमारे पास उन्होंने पैसा नहीं लिया है। अभी उन्होंने कोई पैसे की डिमांड की है, मगर वो योजना का समय मर्यादा खत्म होने के कारण अभी हम उसको उसमें समाविष्ट नहीं कर सकते। 2028 तक जो हमें पूरा करना है वो 2024 पहले की है और उन्होंने कोई डीपीआर बनाकर सैंक्शन नहीं करवाया है, उसके कारण उसको अभी इस स्कीम में हम आगे उसको मदद नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। पहले तो मैं आदरणीय मंत्री जी को, उनका जन्मदिन है आज, तो शुभेच्छा देना चाहती हूँ। सर, माइक मेरा है। जल शक्ति मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल हमारी सहकारी कानिमो जी ने पूछा था उसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जाकर सर्वेक्षण के बजाय आप गूगल पे करते हैं क्या, ये सवाल पूछा था। उसका जवाब ठीक से नहीं दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2011 से हमारा जो सेंसस पेंडिंग है, सेंसस करने की अपेक्षा कर रहे हैं कि सेंसस करेंगे, उसके साथ आप इसकी भी जनगणना कराएंगे क्या कि कौन से घर में नलके का पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। मेरा सजेशन है कि वो करना चाहिए। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न का जवाब दिया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पेयजल राज्य का विषय है, इसीलिए योजनाओं में योजना निर्माण, स्वीकृति, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव ये सभी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जवाबदारी होती है। उन्होंने अगर गूगल से ये किया होगा, ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आई भी है और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमने बताया, हमने 100 करोड़ के ऊपर के सभी जो डीपीआर है उसको फिर से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसके अंदर काम भी कर रहे हैं और पारदर्शिता के साथ ये काम करने के लिए सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए सुजलाम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति परिसंपत्तियों का मैपिंग, जियो टैगिंग और निगरानी की जाती है तथा प्रत्येक योजना को सुजल गांव आईडी दिया गया है। इसके कारण अगर किसी ने गलती भी की होगी तो भी यहाँ ये आईडी के कारण वो पता चलेगा और उसको ठीक करके उसको योजना को पूर्ण की जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 246 श्रीमान P. Wilson ji. I place it on the table. Honorable Minister. Sir, answer has been placed on the table of the House. First supplementary through P. Wilson ji. Chairman, sir. Sir, this monetization target of 27,500 crore has been set for 26 airports, and monetization proceeds is going to help create more airports, sir. Sir, the 6 airports in Uttar Pradesh, namely Kushinagar, inaugurated in 2021 with 260 crore investment. Azamgarh, inaugurated in March 2024 with operations suspended after 8 to 9 months. Aligarh, inaugurated in March 2024 with operations suspended shortly after. Chitrakoot, inaugurated in March 2024 with 146 crore investment and operations suspended after 8 to 9 months. Shravasti, inaugurated in March 2024 with 29 crore investment and operations suspended shortly after. And Moradabad, inaugurated in March 2024 with operations suspended about 3 months. Sir, these were developed and inaugurated under the UDAN scheme.
but have become non-operational due to the low passenger demand, technical issues, low visibility, high operational cost, and lack of airline interest. The reason why the government proceeded with these projects without conducting comprehensive feasibility studies or demand assessment to ensure long-term viability beyond the initial viability gap funding period, and the steps taken to prevent such expenditure and hold accountable those responsible for initiating these ghost airports that have failed to deliver on the promises of regional connectivity. Honorable Minister. So, Chairman, sir, first of all, regarding the question asked by Honorable Thambi Duraiji, I just want to give small clarification on that. Couple of things regarding the Parandur Airport, the site clearance and the in-principle approval has also been given. That has also been forwarded and that has been given. And regarding the that state government has to do now. The acquisition of the land is now the responsibility of the state government. And regarding the Hosur, because it is close to Bangalore, and there are a lot of defense-related operations in Bangalore, the approval for any kind of operations, additional operations there, the approval has to come from Ministry of Defense also. That also I want to put it in the notice. Now, coming to the present question, sir, regarding the monetization plan, especially the Honourable Member has raised the airports where there are no operations happening right now. And coming to that point, see, the infrastructure projects, Honourable Chairman, sir, that are happening, these airports are not only to be seen as an immediate connectivity points for today. These are infrastructural projects which are going to be there for the long term. And now, as we go ahead, the challenge will be much more when we start building new airports, because the land availability is going to get much tougher. Because of rapid urbanization, now you are already seeing, Honourable Chairman, sir, many of the MPs are already requesting for airports in their vicinity. And the first challenge we face when we are looking at building a new airport is the land availability. We need something from 700 to almost 1500 acres when we want to expand the runway. So it is better in any which way that if you can build an airport today for the future, then definitely with the improvement in air connectivity and the passenger demand that we are seeing, all the airports are going to be operational and they are going to be financially viable. That is the point I want to make. And regarding these airports, 6 airports that have been specifically mentioned, that is not a point of low demand from that area. Demand is there from every single area in the country. Even the remote parts of the country today, because of the Udan scheme, Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme, the common man is able to purchase a ticket and fly in civil aviation in the country today. But what is the problem here is the availability of aircrafts. That is a serious bottleneck, not only India, but internationally everyone is facing. Once COVID happened, the orders went for a toss. The companies which were manufacturing these, suddenly they felt that civil aviation is not a very viable sector in the future, because nobody knew till when the pandemic is going to last, or is it going to happen that many other pandemic situations will arise in future. So whoever was giving many orders for aircraft suddenly stopped, and there was a supply chain disruption that happened. And then within that aircraft manufacturing, there is a bottleneck of engines manufacturing also. Now, because of this, the availability of manufactured aircrafts has become very, very low. And because of that, the anticipation that as a country India had that with the growth in civil aviation, we have to build more airports, we have to bring more aircraft, we have built more airports, but the coming of aircrafts has not happened at the demand at which India has created. As we get more aircrafts into our ecosystem, and that is why I was concentrating more on having a manufacturing ecosystem of our aircrafts here also. Once we can develop our own regional transport aircraft and manufacture it. Now many players are coming here because of the demand that is there in the country, and the government is also very positively supporting them so that they can set up their manufacturing ecosystems here. Once you can do that, then definitely all these airports where there are no operations are going to become operational and financially viable also. Second supplementary, Thirupi Wilson ji. Sir, several airports are being leased out to the private operators who will handle the operations, management and who will fix their own charges for the services provided. Why not effective law be brought to establish a regulatory mechanism like commissions or regulatory body to oversee and regulate the airfare, advise policy decisions, then fix the tariff rates like appellate, and have an appellate authority like broadcasting and electricity? Why don't we have a regulatory mechanism for these sectors? Honourable Minister.
Sir, the Air Corporations Act, which was regulating the airfares, was deregulated was repealed. And the airfares was totally deregulated in the 90s itself. And the whole reason being internationally, for the survival of airlines and the viability of the operations, it was kept deregulated, because it is not only one single factor that affects the airfares. There is the fuel cost. There are multiple other costs that are involved in the deciding the airfares. So based on that, whatever the international practice was, India also started following that, and deregulation happened. And on the other side also, deregulation helps in increasing... Now the House stands adjourned to meet at 2 p.m. Sir, as I conclude, West Bengal has always been one of the pillars of India's railway network. It is only fair that the state which helped build the railways should not be left waiting at the platform of development. আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই স্যার, বাংলা কখনো পিছিয়ে থাকে না, আর বাংলার মানুষও উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করে না। বাংলার অধিকার বাংলাকে দিতেই হবে। Railways are not merely tracks and trains, sir. They carry the dreams, livelihoods, and daily struggles of millions of Indians. Development must be fair. Development must reach every state, because the railways do not belong to one government or party. They belong to the people of India. বাংলার মানুষ মাথা নত করে না, বাংলার মানুষ লড়ে, আর বাংলার অধিকার আমরা নিয়েই ছাড়বো। Thank you, sir, for this opportunity. Jai Hind, Jai Bangla. மாண்புமிகு ஸ்ரீ கே பிரகாஷ், மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, நமது ரயில்வே துறை எப்படி இந்த ஒன்றிய அரசால் படிப்படியாக சிதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை அழுத்தமாக இந்த அவையில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு முதல் ரயில்களை அதிகரிப்பது வரை இந்த அரசு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த அநீதிக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கிறார். முதன்மையாக இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் உரையை சுமார் 90 நிமிடங்கள் நிகழ்த்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஒரு முறை கூட ரயில்வே என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை. இதை அவரின் மறதி என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. மாறாக இந்த அரசு ரயில்வே எவ்வளவு துச்சமாக மதித்து செயலாற்றுகிறது என்பதற்கு நிதியமைச்சரே குறிப்பால் உணர்த்தியதற்கு ஆதாரம். அடுத்து, இந்த அரசு ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு பற்றி பெருமையாக பேசுகிறது. ஆனால் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் வெறும் 8.5 அளவுக்கு ரயில்வே நிதி உயர்த்தி இருக்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான புள்ளி விவரத்தை இந்த இடத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன்.
அதாவது 1 கிலோமீட்டர் ரயில் பாதை அமைக்க 44 கோடி ரூபாய் இருந்த செலவு ஒரு ஆண்டில் 73 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கிறது. இது 66% உயர்வு. இந்த நிலையில் 8.5% மட்டுமே ரயில்வே நிதி உயர்வு என்பது எதற்கு அதனுடைய தொகை உரித்தாகும்? ஒன்றிய அரசு மிக அவமானகரமான வகையில் ரயில்வே துறையில் சுமார் 4.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனாளியாக மாற்றியுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டு ஒதுக்கப்பட போகும் நிதியில் 40,000 கோடி ரூபாய், அதாவது 13.5% பழைய கடனுக்காகவே செலவிடப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி கடனில் தத்தளிக்கும் வகையில் ரயில்வே துறையை மாற்றிவிட்டு ஒன்றிய அரசு ஒவ்வொரு ரயில் நிலையத்திலும் ரயில்வே சாதன பதாகைகளை வைப்பதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? இந்தியாவின் 65% பயணிகள் ஸ்லீப்பர் மற்றும் 2ஆம் வகுப்பு பெட்டிகளையே நம்பியுள்ளார்கள். ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பயணிகளுக்கான இடம்பெறும் 1.2% மட்டுமே பயணிகளுக்கான இடம் உயர்ந்துள்ளது. மக்கள் இன்று ரயில்களில் கழிவறை வாசல்களில் அமர்ந்து பயணிக்கும் அவலத்தை நாம் தினந்தோறும் பார்க்கிறோம். அதன் விளைவாக ரயில்வேவை நம்பி பலர் இன்று அதிக கட்டணம் கொடுத்து தனியார் பேருந்துகளை நோக்கி தள்ளப்படுகிறார்கள். இதுவா அந்திதியோத அரசு? யாரை ஏமாற்ற பார்க்கிறது நமது ஒன்றிய அரசு? 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 3000 மில்லியன் டன் சரக்குகளை ரயில்வே கையாளும் என்று இந்த அரசு இலக்கு நிர்ணயித்தது. ஆனால் தற்போது வளர்ச்சி வெறும் 4% மட்டுமே என்று புள்ளி விவரத்தில் உறுதிப்படுத்துகின்றன. உண்மையில் இலக்கை அடைய நமக்கு 16% வளர்ச்சி தேவை. இப்படி சரக்கு ரயில்வே போக்குவரத்தையும் பாதாளத்துக்கு கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த அரசு. இதனால் சரக்கு ரயில் போக்குவரத்து குறைந்து சரக்கு சாலை வழியில் கொண்டு செல்வது அதிகரித்துள்ளது. அதற்கான எரிபொருள் செலவு, நேர விரயம் என பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ரயில்வே துறையில் நிலவும் பொதுவான நிர்வாக சீர்கேடு அல்ல, ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல. ரயில்வே நிலையங்களில் இருக்கும் காகித பதிவேடுகளில் புகார் எழுதும் பழங்கால முறையே தொடர்கிறது. டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற முழக்கத்தில் இருந்து ரயில்வேவுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கா? அல்லது ஏழை நடுத்தர மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் ஒரு சேவையை இதுவே அதிகம் என்று பாகுபாடா? மேலும் ரயில்வேயில் வழங்கப்படும் உணவுகளின் தரம் குறித்து பயணிகளின் புகார்கள் குவிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது தொடர்பாக ஒரு ஆய்வேனும் நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா? இவற்றோடு மிக முக்கியமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கள் ரயில்வே தொடர்பான மக்களின் புகார்களை தேவைகளையும் பற்றி தெரிவிக்கும் போது அதற்கு முறையான ஃபாலோஅப் இதுவரை கிடையாது. ஒரு நடவடிக்கை பல முறை சொல்லி நடவடிக்கையை காத்து கிடக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை தீர்வுக்குழு எம்பி கிரீவன்ஸ் ரெட்ரஸல் கமிட்டி என்ற ஒரு கமிட்டியை இந்த அரசு உடனடியாக அமைக்க வேண்டும். இறுதியாக ஈரோடு மற்றும் மேற்கு தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி இந்த அரசு தொடர்ந்து புறக்கணிப்பதை சுட்டிக்காட்டி இந்த அரசு மக்களின் நீண்ட நாள் ரயில்வே கோரிக்கையை இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறேன். ஈரோடு நாமக்கல் இடையே குமராபாளையம் வழியாக நேரடி ரயில் பாதை அமைப்பது பல ஆண்டுகளாக புறக்கணிக்கப்படுகிறது. இது கொங்கு மண்டலத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான தேவைகளில் ஒன்று. கோயம்புத்தூர் ஈரோடு எம்இஎம்யூ ரயிலை கரூர் நாமக்கல் வழியாக சேலம் வரை நீட்டிக்க வேண்டியது அவசியம். இதன் மூலம் மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட அன்றாட வேலைக்கு செல்பவர்கள், பயணிகள் பயன்பெறும் வகையில் பயனடைவார்கள். ஈரோடு நாடாளுமன்ற மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஈரோடு பழனி நேரடி ரயில் சேவை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானின் மீது திடீரென்றும் பாசம் வந்து விளம்பரம் காட்டும் இந்த அரசு இதுவரை ஈரோடு பழனி நேரடி ரயில் சேவையை தொடங்க முன்வரவில்லை. வீண் விளம்பரங்களுக்காக வேல் யாத்திரை செய்யாமல் உண்மையான பக்தர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை கணக்கில் எடுத்து உரிய நடவடிக்கை விரைந்து எடுக்க வேண்டுகிறேன். ஈரோடு திருப்பூர் வழித்தடத்தில் பயணிகள் ரயில் எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை விடுக்கிறேன். கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக அந்த கோரிக்கை நிலுவையிலேயே உள்ளது. இந்த ஒன்றிய அரசு ஆர்ஓபி விஷயத்தில் பல இடங்களில் அனுமதி அளிக்காமல், ஈரோடு நாடாளுமன்றத்துக்குட்பட்ட பல இடங்களில் அனுமதி அளிக்காமல் கண்ணாமூச்சி ஆடி வருகிறது. எனது தொகுதிக்குட்பட்ட ஆர்ஓபி கோரிக்கைகளை முன்வைத்தும் இதுவரை எந்த அனுமதியும் வழங்கப்படவில்லை. இதற்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
பொதுவாக ரயில்வே துறையில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டிய இடங்களில் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல் ரயில் திட்டங்கள் நிர்வாக சிக்கல்களும் தேவையற்ற தாமதமும் நிகழ்கின்றன. இதற்கு உதாரணமாக வெள்ளகோயில் சங்ககிரி ஆர்ஓபி இவர்களின் மோசமான நிர்வாகத்தில் கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக நிலுவையில் உள்ளது. அதே போல அன்ரிசர்வ் பெட்டிகளில் சுமார் 144 பேர் பயணிக்கும் அந்த அன்ரிசர்வ் பெட்டிகளில் அந்த விதியை பின்பற்ற தவறியதால் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு அன்ரிசர்வ் பெட்டிகளிலும் ஒரு 250க்கும் மேற்பட்டவர் 300 பேர் ஒரு கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் அதில் பயணிக்கின்றனர். இது ஒரு பாதுகாப்பற்ற தன்மையை அந்த மக்களுக்கு ஏற்படுகிறது. அந்த கூட்ட நெரிசலில் ஏற்படும் இத்தனை பேர் அனுமதிக்க வேண்டுமோ அத்தனை பேருக்கு மட்டும் டிக்கெட் வழங்கப்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கென்று ஒரு தனி அதிகாரி கண்காணிக்க வேண்டும். ஆபத்தில் அன்ரிசர்வில் ஏற்படும் ஆபத்தில் அந்த அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ரயில்வே என்பது இந்திய நாட்டின் இன்றியமையாத பொதுத்துறை நிறுவனம். சாமானிய மக்களின் போக்குவரத்து மட்டுமல்லாமல் மாநிலங்களின் வளர்ச்சியும் இதில் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. இத்தகைய முக்கியமான துறையில் அலட்சியம், நிர்வாக திறமையின்மை, நம்ம மாநிலங்களின் மீதான பாகுபாடு பார்வை ஆகியவற்றுக்கு எந்த இடமும் தயவு செய்து இருக்கக்கூடாது என்பதை இந்த அரசுக்கு இந்த அவையின் வாயிலாக உணர்த்துகிறேன். வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் எங்களுடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் வென்று ஒன்றிய அரசிடம் போராடி தமிழ்நாட்டின் உரிமையை மீட்போம், காப்போம். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு. माननीय श्री GM हरीश बालयोगी जी. Sir, Mike, sir. Honorable Chairperson, sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the demand for grants under the Ministry of Railways 26-27. At the outset, I would like to acknowledge the continued commitment of the government under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji towards strengthening India's railways infrastructure. The Union budget has provided a record capital outlay of nearly 2.93 lakh crores for the Indian railways, reflecting the priority being given to modernization, expansion and capacity creation across the networks. In the past few years, we have witnessed several important milestones: the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link and the commissioning of the new Pamban bridge stand among the remarkable achievements of the Indian railways. Today, over 99% of the broad gauge networks have been electrified, which represents a significant step towards efficiency and sustainability. Sir, on behalf of the people of my state, Andhra Pradesh, I would like to express my gratitude to the Honorable Railway Minister, Shri Ashwini Vaishnaw-ji, for the continued support extended to the state, which has been allocated a remarkable 10,134 crores in this year's railway budget. I also welcome the announcement of 2 high-speed rail corridors passing through the state, which will greatly enhance connectivity and support long-term economic growth. Andhra Pradesh today is witnessing significant economic activities, with investment flowing into sectors such as manufacturing, renewable energy, data infrastructures and logistics. At the time like this, connectivity becomes the most critical enabling factor, and railways play a decisive role in supporting this growth. Chairperson, sir, this becomes even more important when we look at Andhra Pradesh's huge coastal advantage. Ports such as Visakhapatnam, Krishnapatnam, Gangavaram and Kakinada provide the state with a natural gateway for exports. If these ports are effectively connected with industrial clusters and inland district through efficient railway freight networks, the state can emerge as a major logistics and manufacturing hub. I urge the Honourable Minister to consider exploring the same. This brings to the central point I wish to emphasize today. Connectivity must reach the last mile. While rail connectivity reaches the last mile, it brings people more closer to markets, education, healthcare, and new opportunities. When we have seen this in Kashmir, when the Chenab Bridge is helping connect Valley with the rest of the country, and in the northeast, where states like Mizoram, which remain unconnected since independence,
are now being linked with the rest of the country through the railways. The same commitment to last mile connectivity must now extend to other regions where people are still waiting for railways to reach them. In several parts of the country, the completion of these promises of connectivity remains pending, including in my state of Andhra Pradesh, where projects such as Vijayawada-Gudur, Bhadrachalam Kovur, Kurnool Nandyal, and Guntakul Guntur, while being sanctioned to address to this very challenge, are yet to be completed. In my own constituency, the Kotipudi-Narsapur railway line has been long cherished dream of my people, as its completion would help bring Konasima's untapped beauty, agricultural products, fishing communities, and industrial cluster closer to the larger markets across India as well as the rest of the world. While I appreciate the continued support and commitment of the NDA government to complete this long pending project, I would like the Honourable Minister to consider expediting and completion of this long pending railway project through stronger monitoring mechanisms. Platforms such as Pragati, which has already helped resolve bottlenecks in major infrastructure projects, could also help accelerate their completions. Chairperson, sir, at the same time, expanding the railway networks and improving last mile connectivity requires significant capital investment and resource allocation. The ministry has set the target of achieving 500 kilometers of new lines with investment of 36,721 crores in the budget estimate 26-27. While this should help in completion of the project, I would urge the government to fast-track implementation of certain suggestions that may help in increasing revenue. Firstly, sir, I would like to take account of the modernization of the railway stations. Railway stations play an important role in boosting connectivity and economy of the place. They become the center for trade and commerce, medicine, and even tourism. I commend the government on its initiative under the Amrit Bharat Station Scheme to redevelop, upgrade, and modernize railway stations across India. In my state of Andhra Pradesh, around 73 stations, including Visakhapatnam, Vijayawada, Rajahmundry, and Kuppam, have been marked for upgradation. Despite carrying nearly 40 times the passengers of domestic aviation, Indian Railways has an immense untapped potential to generate greater non-fare revenue through the modernization and commercialization development of the railway stations. Given the importance of the railway station as an enabler of economic and social growth, I would humbly request the Honourable Minister to consider carrying out a modernization of a railway station in a PPP model, looking at the success of the modernization of the Rani Kamalapati railway station in Madhya Pradesh. Strength oversight mechanisms to ensure proper oversight on redevelopment of railway stations happen in a modern, proper manner. The second point of suggestion, sir, is the asset monetization and advertising. With over 7,000 railway stations and more than 2 crore passengers under the network every day, railway station represents valuable economic spaces. It has earned more than 3,000 from land alone in 24-25. This showcases the vast potentiality that Indian Railways carries with it. While these efforts have been undertaken via innovative schemes such as new and innovative non-fare revenue idea schemes, rail display networks, progressive electrification, there are still more steps to be undertaken. The government must consider increasing its revenue via advertising, seasonal branding, and sponsorship deals on rail coaches at the stations and other railway properties. Lastly, in this age of innovation, we must consider increasing the efficient and proper utilization of resources via emerging technologies such as AI and ML, blockchain-based initiatives, and others. I commend the government on its steps taken in this direction via the machine vision-based inspection system, automatic wheel profile measurement system,
passenger assistant initiatives. The government must ensure that these initiatives are only the starting blocks towards a pan-India approach. Concluding, Chairperson Sir, Indian Railways have always been more than a transport network. It has been a powerful instrument of the economic development and national integration. A railway track that ends just off a short village, a freight terminal that does not connect to a port, or a line that has been surveyed but never completed reflects the distance between where a community is and where it could be. As we move forward towards with a record investment and ambitious reforms, it is important that the benefit of railway expansion reach every region. Strengthening the last mile connectivity, completing long pending projects, and linking emerging industrial regions to the railway network will ensure that the Indian Railways continues to play a vital role in India's growth. With these words, I conclude that the trust that the ministry will continue to prioritize the last mile connectivity and the timely completion of long pending railway projects. Thank you, sir. धन्यवाद। माननीय श्री कौशलेंद्र कुमार जी। आपने मुझे 2026-27 के लिए मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइक दीजिए सर। दे दिया। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा 1 फरवरी 2026 को आम बजट के साथ साथ रेलवे के व्यय के लिए भी प्रस्ताव में करीब 3,02,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो वर्ष 2025-26 के बजट से करीब 8.4% ज़्यादा है। यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और हमारे रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, दोनों को बधाई देता हूं। चलिए। हमारे रेलवे कमेटी के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, रेलवे भारत की लाइफलाइन हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में जो बंदी हुआ है, इसकी महत्ता थोड़ा कम है। यात्रियों के किराए में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, गाड़ियाँ की संख्या भी कमी हुई है, किंतु वह माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दिए हैं, गाड़ियाँ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रेलवे की योजना जिसमें सीनियर सिटीजन, पत्रकारों,